Welcome back, students. So through our last video we have completed our chapter 6 manufacturing industries, okay, in which we have discussed about the information technology industry as our last topic, okay. So from today we are going to start with a new chapter 7, Lifelines of National Economy, okay. Now लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बेसिकली मीन्स कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, ओके, वो इकोनॉमी certainly it is running on three sectors. Which three? The primary sector, which is what the agriculture; secondary sector, that is what the manufacturing, that is industries; and third is the services. Okay, but all these three sectors are useful. It means they can be productive only when we are having some other infrastructure available, okay, and that infrastructure which we are going to discuss through this chapter is considered here as a lifelines of national economy. यानी हमारे कंट्री की, हमारे राष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो किसके बेस पर रन कर रही है? इट रन्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज infrastructure. Okay, so in this chapter that infrastructure is categorized into three categories. Okay, so one is what? The transport. Okay, now transport is of different types: the land transport, okay, then air transport, as well as the waterways. Okay, so this subtopic transport is a vast topic. So we are going to cover it in a different subtopics, and depending upon the vastness of the subtopics, again we will have to divide the subtopics into more categories. Okay. Now, apart from the transport, the next way, okay, the next infrastructure which is also important for the development of our economy is what? The communication. Okay, so communication plays very important role in the development of country's economy. Basically, communication is an infrastructure which helps the things move on a proper way. Okay, so the second thing that we'll discuss is about the communication. Okay, and the third, which is important as a lifelines of national economy, is what? The international trade. Okay, so we'll be having the three major topics in this chapter: transportation, second is communication, and third one is the international trade. These are considered as three basic infrastructure, and which are being termed on a chapter as lifelines of national economy. Okay, so we are going to start with the first topic, that is transport. Okay, now it is a very big subtopic, so we have to divide this into the different modes of transportation. Okay, so our subtopic for today is the roadways. Now in roadway, again it is a vast one as per the syllabus, so we have divided it again the small subtopics. So roadways, today we are discussing about what are the advantages of roadways over railways. Okay, in next video we'll discuss something more about the roadways. Basically, in next video under the roadways subtopic we'll discuss about the different types of roads. Okay, so in this video we'll be discussing about the advantages of roadways over railways. Okay, so the first advantage of roadways over railways is what? Construction cost of roadways is much lower than railways. Okay, so the most important thing about the roadways is what? Construction cost of roadways is much lower than railways. Okay, तो सबसे बड़ा एडवांटेज रोडवेज का है वो क्या है कि विद कंपैरिजन टू द रेलवेज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज मच लोअर. ओके, रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है,
Okay, that is very less with comparison to the railways. Okay, so railways के कंपैरिजन में रोडवेज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसा है, बहुत कम है, इसलिए रोडवेज को ज्यादा से ज्यादा एरियाज में एस्टैब्लिश किया जा सकता है, whereas कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रेलवेज आर मच हायर, इसलिए जहां जरूरत है हर जगह पर क्या एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, रेलवेज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. ओके, सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस रोडवेज ऑफर फॉर अस. ओके, सेकंड इज रोड्स कैन बी बिल्ट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स. ओके, व्हाट डज इट मीन्स? जो मार्शी लैंड्स ऑफ एरियाज है ना, जो दलदली इलाके हैं या और डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं, ऑन दीज एरियाज इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, टू एस्टैब्लिश रोडवेज, सॉरी रेलवेज, whereas in case of the roadways it is easy to establish these roadways at different areas. Okay, so roads can be built on a different type of landforms. Okay, अलग अलग प्रकार की जो जमीन है, उबड़ खाबड़ एरिया है या स्लोप वाला एरियाज है. ओके, एट एवरी प्लेस इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू कंस्ट्रक्ट द रोडवेज. ओके, roads can negotiate higher gradients of slopes. Okay, now negotiate basically means कि जो बहुत ज्यादा ऊंचे इलाके हैं. Okay, we are basically talking about the Himalayas. Okay, now on Himalayas it is very 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 difficult for the construction of railways because of the heavy steep slopes. Slopes बहुत ज्यादा है. Okay, and because of basically the overall weight on which the railways are to run. Okay, जो entire track है उस ट्रैक को बिछाने में बहुत ज्यादा लेवल पर परेशानी होगी and the construction cost increases a lot. Okay, on the Himalayas when we are planning for the construction of railways. Okay, so railways के comparison में roadways can negotiate the higher gradients of slopes. Okay, बहुत जो स्टीप स्लोप वाले एरियाज हैं वहां पर भी रोडवेज का कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली इजी है एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ roads, okay, running the vehicles on those roads are also very easy with comparison to the railways. Okay, so roads can negotiate the higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas. Okay, आज इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी very few countries in the world are there who are able to construct a good railway network on the high mountains. Okay, जो बहुत ऊंचे हाइट वाले माउंटेन्स हैं वहां पर रेलवे नेटवर्क एस्टेब्लिश करना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है एंड it is not only near to impossible but most problematic thing is that it incurs a very heavy cost. बहुत ज्यादा लागत रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए लगती है if we are talking about the construction of railways on the Himalayas in our country. Okay, we are still a developing country, we cannot afford such a very heavy cost of railway constructions on each and every places of these Himalayas mountains. Okay, so हमारे कंट्री के लिए इस परिप्रेक्ष्य में, इस कंडीशन में ये बहुत important है कि we are not able to construct the railways for most of the region of the Himalayas. So roadways are providing, okay, a option. Roadways are providing an option for the construction of transportation network. Okay, economical for short distances, less load of goods and few people. Okay, जो
नेक्स्ट बिगेस्ट एडवांटेज रोडवेज का है वो क्या है, इफ द पीपल नीड टू ट्रेवल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, यदि कम दूरी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करना है, फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन ए चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके, certainly railways provide okay a fast transportation. तो क्या हम पूरे चंद्रपुर जिले में रेलवे नेटवर्क एस्टेब्लिश करना अफोर्ड कर सकते हैं? नो, बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस एंड फॉर दैट मच लेस डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर. ओके, सो फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस रोडवेज प्रोवाइड द इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोडवेज क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सस्ता है. ओके, बजाय इसके कि हम हर एक जगह पर क्या रेलवे ट्रैक बिछाएं और रेलवे नेटवर्क के जरिए वी कैन डू द ट्रांसपोर्टेशन, बट दैट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल. ओके, then it is economical for less load of goods. Okay, रेलवे से यदि सामान भेजना है, पूरी की पूरी रेलगाड़ी बुक करो, उतना ज्यादा सामान भेजो, but in most of the cases people do not need the transportation, okay, for such heavy loads. हम में से मैक्सिमम लोगों को जो अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, क्वांटिटी इज लेस, द वेट इज लेस. ओके, सो रेलवे इज नॉट ए गुड ऑप्शन. रोडवेज जो है वो क्या करता है, छोटे वजन के सामान को बड़ी इजीली ट्रांसपोर्टेशन करवाने में सक्षम है एंड इट इज इकोनॉमिकल. ओके, उसी के लिए यदि हम रेलवेज बुक करते हैं देन इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर्स. ओके, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पीपल. कम जनसंख्या के लिए 50, 60, 100 लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए over a short distance roadways is economical. Okay, it provides door to door service. अब door to door service का मतलब क्या है? रेलवेज हर जगह पर, कॉलोनी में, घर के पास, कहीं पर भी आप रेलगाड़ी नहीं ले जा सकते. ओके, यू कांट कंस्ट्रक्ट अ रेलवे नेटवर्क ऑन ईच एंड एवरी प्लेस. ओके, सो what the roadway do? Roadway provide door to door services. Okay, railway transportation, rail mode of transportation का यदि आपको यूज करना है then क्या होगा? You have to go up to Ballarsha, still 40 kilometer distance you have to cover. Okay, then you will be dropped at the Nagpur railway station, but from Nagpur railway station then reaching to the other part of the city, the railway network is not available. Even in case of the metro rail, which is being laid down nowadays, again it reach you up to a particular station, but उस station से rest of the places, घर जाने के लिए, आपकी कॉलोनी जाने के लिए railway is not available. Okay, the biggest advantage of roadway is this only. What the roadways provide door to door services. roadways क्या करता है? door to door services provide करता है. ठीक है, आपके घर के आप नीचे उतरे, जस्ट सीढ़ियां नीचे उतरे फ्लैट से, व्हीकल इज अवेलेबल टू यू. इट मे नॉट बी ए बिग बस. ओके, यू कैन इवन कॉल द बस ऑल्सो इन योर कॉलोनी, बट बस परमिट नहीं है, सो एटलीस्ट योर व्हीकल इज अवेलेबल एट योर डोर स्टेप. ओके, वंस यू रीच, अगेन कहीं ना कहीं आपको आपके घर पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रोड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी. ओके, सो रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज. ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर फॉर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बाकी के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, इट इज वाटरवेज. वाटरवेज बेसिकली वी आर कॉलिंग फॉर द overseas transportation. Okay, because the inland waterways in our countries are very less. Okay, that we'll discuss very broad in waterways topic. Okay, जो waterways का topic है वो separate है हमारा. There we'll discuss about the inland waterways transportation and overseas waterways transportation. But what the roadways do for us, or how roadways is useful? The roadways provide feeder for other modes of transportation. Okay, जो बाकी के modes of transportation है,
रेलवेज है, एयरवेज है या फिर वाटरवेज है। ओके, वाटरवेज पोर्ट के आगे उसका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। एयरवेज है, एयरपोर्ट के आगे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। रेलवेज, रेलवे स्टेशन से दूर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक, दैट इज अप टू रेलवे स्टेशन, अप टू एयरपोर्ट और अप टू द सी पोर्ट। ओके, जो प्रोडक्ट है या इन केस ऑफ द पीपल आर ट्रेवलिंग, लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम किसका है? रोडवेज का है। ओके, सो इन दैट सेंस roadways used as feeder for other modes of transportation. Okay, so these are some of the advantages of roadways, okay, over the railways. Okay, roadways के बहुत सारे advantages हैं किसके कंपैरिजन में? रेलवेज के कंपैरिजन में। रेलवेज certainly had its own advantages. Okay, it depends on the conditions. Okay, what are the conditions? Okay, so roadways have its own advantages with comparison to the railways. When we will discuss the railways as a mode of transportation, we will also have a comparison in how the railways are also useful. Okay, so it depends on the conditions, but under these conditions which we have discussed today, okay, roadways are having advantages over railways. Okay, dear students, थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इन्हें डिस्कशन करें। सिंस इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस दिस कंपैरिजन बिटवीन द रोडवेज एंड रेलवेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अक्सर पूछा जाता है हाउ डज रोडवेज स्कोर ओवर रेलवेज। Okay, what are the merits of roadways over railways? Give a comparison between the roadways and railways. Okay, so these are the few points, okay, which we are supposed to write as a part of an answer. Okay, when the question is asked in any examination. Okay, so be careful. Please watch the whole video for the better understanding, and if you will be having any doubt, you can ask your doubts through WhatsApp on my WhatsApp number. Okay, thank you. So in next video we'll discuss again the same topic, transport, roadways, and in that next video we'll discuss about the different categories under which the road network available in our country is divided. Okay, अगले वीडियो में हम इसी रोडवेज टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और वहां हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में जो ओवरऑल रोडवे नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग टू द लैंड इंपॉर्टेंस, ओके, एंड बेसिकली हाउ मच लोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द रोड्स कैरीज। सो इन सभी के बेस पे हाउ we have categorized the road network available in India. Okay, thank you.